रेस्पोंडेंट, ठीक है, आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, सारा इल्जामात आपके सर पे है, तो आप आज वकील नहीं हैं। या तो आप कहें कि मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ, अलग बात है। आपके वकील कौन है? आपके वकील कौन है? हामिद खान साहब है, तो फिर वो मौजूद हैं। ठीक, शुक्रिया। My Lord, I was reading to your Lordship from page 55 of the order of the Election Commission, and if your Lordship turns, ये तरीक़ेकार खत्म कर लेना इनका आइन में, जो इनके आइन में इंदराज है। तरीक़ेकार क्या होता है? My Lord, that was Federal Election Commission is provided. इनका जो आइन में जो आप पहले कुछ क्लॉजेस पढ़ रहे थे 5 पॉइंट, तो इसमें और कुछ तरीक़ेकार है या बस ये है? सर, page 140 I was reading to your Lordship. नॉमिनेशन फॉर्म का कोई तरीका है, मेंशन्ड है, कैसे होना चाहिए? It doesn't go into that many details, but if your Lordship sees on page 141, paragraph 5.2.2, जी, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization as given in the relevant clauses. ये relevant clauses बताइए कौन से हैं? ये सर आगे आते हैं। अगर आप सर आगे देखें, then on page 142, इसमें नॉमिनेशन फॉर्म को भरने का क्या तरीका है? वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है या कोई अलग से रूल है? No sir, it's not there. How the nomination form will be given to the नहीं, मतलब वो जो अगर कोई क्लॉजेस है बता दें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। जी सर। सर, the organization is given, sectoral organization is given at page 142 onwards. Then if your Lordship will see, thereafter there is the Election Commission is mentioned, and if your Lordship sees ये the central organization is mentioned. सब से ये पूछ रहे हैं कि बता दें तरीक़ेकार क्या? ये एक पढ़ लिए पेज 90 पे मेरे ख्याल है इनका है ये 192 my lord. नो 90 पे ये कहीं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन फॉर्म का हासिल करना और उसको जमा करने का कोई तरीका नहीं है, आप कह रहे हैं ना सर? अब पेज 90 पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेटर लगा हुआ है पेज 90 पे, ये इनका इलेक्शन शेड्यूल है जो जारी कर रहा है फेडरल इलेक्शन कमीशन, उस पर नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब की साइन है। अब इसमें देखें ना, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर 29/11/2023, राइट। ये लेटर इशू भी 29/11 को ही हुआ है इनके सिग्नेचर से। नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर्स, अपील्स अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस, डिस्प्ले ऑफ नेम्स। नहीं तो ये नॉमिनेशन पेपर का कोई वो है फॉर्मेट या क्या उसको कहते हैं, प्रोफॉर्मा? सर, इट्स नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट देयर इन द रूल्स इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन। बट व्हाट अबाउट वेरी दिस लेटर, बिकॉज़ इसके अंदर ये मेंशन है ना, प्रोसीजर पूरा इन्होंने किया हुआ है ना। जी सर। अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल, पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन थे? नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर्स। The returning officers were, my lord, if your lordship may turn the page at page 91. The returning officers are nominated. They are all nominated by the Chief Election Commissioner. For the Federal Election Commission, एक सेंट्रल इलेक्शन है, एक प्रोविंशियल बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब एंड सिंध, इसके लिए 4 अलग-अलग 4 है सर। फिर अगर आप अगला सफा देखेंगे सर, तो प्रिजाइडिंग एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर नॉमिनेटेड। दे आर 10 इन नंबर। ये डिटेल नहीं है कि वो कितने लोगों ने कंटेस्ट किया है या नहीं किया है, या फॉर्म दाखिल करके विड्रॉ कर लिया तो अनअपोज आ गए, जो नॉर्मली होता है ना कि आप विड्रॉ कर लेते हो कि भाई ठीक है, आई विल नॉट कंटेस्ट। Not on our record, my lord. Not on our record. Even the withdrawal of the other panels, we don't have any records. Withdrawal panels की बात करें, withdrawal panels कहाँ है? हमारे पास नहीं, ये we don't even have a letter showing कि बाकी panels ने withdraw कर दिया। Announcement कहाँ? जी। So my lord, these are there. Then if your lordship may go back to page 192, how the Federal Election Commission is to conduct itself. You have taken my book, yeah.
My Lord, Federal Election Commission. If an election commission shall be formed comprising following Federal Election Commissioner. बात कर चुके हैं आप सर, अगर आप रिपीट ना करें कुछ नहीं सर, ठीक है, अगर आप सर पैराग्राफ 2 ऑनवर्ड्स देख लें, and then the functions, and then लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे इनके, इस इलेक्शन से पहले? ये कौन से इलेक्शन PTI के इलेक्शन सर लास्ट पोलिंग डे 2 दिसंबर के इलेक्शन से पहले कौन से इलेक्शन हुए हैं? 2017, डेट 19th June 2017, 19 जून 8 जून तो ये कह रहे हैं 22 को हुए, आप कह रहे हैं 17 में हुए हैं। what happened was, नहीं, वो दिखाइए हमें, रिकॉर्ड से बताइए। my lord, the 8th June 2022 intra-party elections were declared void by the election commission. My lord, the first order of the election commission deals with it, and that order of the election commission is at page 428 in part 2 of your lordship's file. 428. ये क्या कह रहा है ऑर्डर? Sir, if your lordship will see, relevant page 435, paragraph 424. 435. Paragraph? Just paragraph 24, just I'll read 5 lines and then I'll move on from here, my lord. We scrutinize all the documents provided by the CEC in respect of meetings of the General Council, as well as the alleged intra-party elections of various office bearers, but we did not satisfy therefrom the available records submitted by CEC that either the National Council dissolved and ever convened its meeting, or on 10th of June 2022 at this juncture, it would be pertinent to refer to various letters. Your lordship may different dates for that election. each of these letters which are mentioned. कंक्लूड क्या कर रहे हैं, ऑर्डर क्या रहे हैं? Sir, इनको दोबारा टाइम दिया था। different dates were given to them, and वो वाला पोर्शन पढ़ देना। my lord, I'll read the कंक्लूडिंग क्या कर रहे हैं? letter dated 10th. लीनियंट व्यू लेके इसमें उन्होंने कहा है कि आगे पढ़िए ना, करते हैं। पैराग्राफ 34 पढ़िए, आखिरी पैराग्राफ है ना जी सर, इसको थोड़ा सा जल्दी करें ना। all right. Keeping in view the aforestated reasons, we are confirmed in our views that the respondent party failed to hold transparent, just and fair intra-party elections in accordance with its prevailing Constitution 2019, allegedly held on 10th June 2022, which is highly disputed, objectionable, which could not be accepted at all. Therefore, it is held that respondent party has failed to hold its intra-party election within the extended period of 1 year till 13th of June 2022, but we, instead of taking the final step to invoke the provision of section 215(5) of the election act. 215(5) क्या है? 215(5) ये कहता है सर कि अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई नहीं किया और उसको 209 के साथ पढ़ के कि इलेक्शंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सो देन यू विल बी डिनाइड अ सिंबल. दैट्स वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. पढ़ते रहिए प्लीज. A lenient view is taken with direction to the respondent party to hold its intra-party election strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, and its result along with all the required documents including Form 65 shall be submitted thereafter the election within 7 days before the commission. So this is taking a lenient view. They said hold elections. In case the respondent party fails to comply with directions of the commission and fails to hold its intra-party election within the prescribed 20 days, which will run from today, the date on which this order is announced, in such eventuality, the respondent will suffer the penal consequences of section 215, subsection 5 of Election Act accordingly, and would be ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament. ये challenge हुआ order? Sir, this was challenged before the Lahore High Court in a writ petition number 5791. एक सेकंड. In writ petition number 5791 of 2023. 5791 of 2023.
ऑर्डर किधर है? No, my lord, this is, I'm sorry, I've given you, lordship, the wrong number. Sorry, in WP number 81171. 811 of 2023. दोबारा कहिए 81171 of 2023. जी This, my lord, is at page 644 of your lordship's file. Part 3. Part 3. Yeah, this is that page. 644. 644. Copy वालों को ले रखा है। This is a copy of writ. Where is Yes, the my order? lord. Yes, my lord. Then, no, my lord, no order is passed. What happens is that this is referred to a 5-member bench of the High Court. At 6:55. ये जो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी पे एजेंट हुआ ये जी सर, ये पढ़िए ऑर्डर। Through the instant constitutional petitioner, the petitioner has made the following prayer. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare and hold that the impugned order of 23rd November 23 is misconceived, quorum non judice, and set it aside inter alia on facts and grounds as urged herein above. Declare, find, and hold that the intra-party elections held on 10th of June 2022 had been validly held in accordance with the party constitution and law. Declare that amendment to Article 5, Clause 5 has been validly and lawfully made in accordance with law and party constitution. In the meanwhile, this court may kindly be pleased to suspend the operation of the impugned order dated 23rd November 2023 and restrain ECP from passing any further adverse order till final disposal of the title petition. Notice is issued. If your lordship will then turn the page to page 657. This was the last order prior to be heard with WP 332. This, as your lordship will see, is fixed today. ये 332 क्या चीज है? पेज 2 ऑफ दिस ऑर्डर 656 इसमें लिखा है कि ये केस सुना जाएगा एक और केस के साथ WP। There is some other case. ये ऑर्डर तो ये बताता है मखदूम साहब 8/12/2023 का कि ड्यूरिंग दैट पीरियड दे हैव ऑलरेडी कंडक्टेड फ्रेश इलेक्शंस। ये सर ये 657 इसमें लिखा है ना बीच में व्हेन ये मैंने नहीं पढ़ा है ये 657 सर। अच्छा ये ऑर्डर तो फिर 15/12 का आपने पढ़ा है? जी सर 8/12 का ऑर्डर उससे पहले का सर जो है इसमें भी WP 332 का जिक्र है। जी मगर उससे ऊपर जो लिखा है when confronted with ये 332 WP क्या चीज है? Sir, there is another petition pending before a full bench of the court relating to other matters. I am not fully aware of it, what it is about. अच्छा ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे इनके जो आप कह रहे हैं जायज नहीं है वो कह रहे हैं जायज है, उनके रिजल्ट क्या है? इलेक्शन रिजल्ट हेलो आप कह रहे हैं ना कि ये जो इलेक्शन इनका कहना है कि ये 8/6/2022 के जो इलेक्शन थे इनके ये सही थे, आपको कहना है ये इलेक्शन सही नहीं थे, उसके रिजल्ट्स क्या हैं? उसका सर उसके नतीजे पे दे हेल्ड अनदर इलेक्शन। नतीज किधर है? कौन जीता? This is the election which that is the election which your lordship saw where everybody was नहीं ये तो अभी के इलेक्शन की बात हो रही है ना, मैं 8/6/2022 के इलेक्शन का पूछ रहा हूँ, वो नतीज कहाँ है उसके? आप सवाल समझ गए? They are not on the record. The reason why we have not brought them on the record is that they accepted the order of the election commission and they have वही लोग हैं जो कि ये मौजूदा हैं या अलग लोग थे? My lord, I'll have check. We can check, but खान साहब आप बता सकेंगे, इस पे रोशनी डाल सकेंगे? जो 8/6/22 का जो आपका इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्टेड कौन हुए? आप बकौल आपके कौन लोग इलेक्टेड हुए उनसे? हाँ नहीं वो फर्क है जो मौजूदा इलेक्टेड लोग हैं वो पता नहीं ये दे देंगे उस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में सर लिखा है सर
उन्होंने ये इलेक्शन कराया एंड देन मिस्टर नहीं बेशक देखिए हम आपको बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, हम आपको वक्त देंगे, मगर जैसे जैसे सवाल उठते जा रहे हैं तो वो आप नोट करते जाइए, या फिर अगर आपके फ़ौरन जवाब है तो दे दीजिए, क्योंकि ये 3 वॉल्यूम्स इनने फाइल किए हैं, हमें भी बड़ी दुश्वारी हो रही है इसको पढ़ने में। तो अगर किसी चीज़ का जवाब है तो दे दीजिए, अगर जवाब नहीं आप लाना चाहते हैं बिल्कुल आप ज़रूर फाइल कीजिए। नहीं आप नोट करते जाइए ना ये चीज़। अब सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि ये जो नताइज थे जो 8/6/2022 के, ये 8/6 इलेक्शन डेटेड इसमें पेज 412 पे है। 2022 10 को हुए, 6-8 को हुए, हमें 10/6/2022 के थे ना आपके पिछले इलेक्शन। इसमें पेज 412 पे है जनाब। प्रेयर में हाईकोर्ट की प्रेयर में लिखा है 10/6/2022। 4-1 At that time, Gowhar Ali Khan साहब was the 4-1 chairman, गौहर साहब थे। ये जो आपका 4-1 412 probably. ये पेज 412 देख लीजिएगा। 412. हाँ ये आ गया ना, नहीं ये तो कुछ और है। नहीं 412 सर। ये तो पढ़